Hey everybody, I hope you can hear me better. And I don't know, I'm just casting my screen from iPad to my laptop, so I'm not sure how much clear and better you're able to see. Well, this video is all about to talk about a very common topic nowadays, which is how to say basic steps you should follow if you are also starting your tech startup. Okay. So I'm going to talk very basic steps you need to if to follow or to put your attention on if you're also starting your uh, tech startup. Okay, so like what do we need to start a tech startup? I'm going to explain my flow. Okay, this is like my flow, what I'm using, what I used. Okay, first of first of all, you should be having an idea. This is very important. Okay, this idea could be like anything, and you think that this idea will work because you think this will work, and maybe you discussed it with many people or not many people. So basically, idea जो है that should be a problem solving idea. This is what I thought. This idea should be a problem solving idea. Problem solving idea. So this idea should solve problem for a particular domain. Okay, for a particular domain, which could be anything, which could be any like it's solving for IT or manufacture or medical, agriculture, whatever. So this should be a problem solving idea for any domain, and your idea should be problem solving. If it cannot solve a problem, okay, if if your idea is not a problem solving idea, in that case, it should at least do something better on a current solution basically. In that case, your idea should be able to make a current process or work more smoother and should save time and money. So what I want to say, if your idea is not a problem solving idea, it's not solving an existing problem, then it should be able to save money and time on a already existing solution. तो बेसिकली आपका आइडिया जो है वो या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो या फिर वो किसी एग्जिस्टिंग चीज को और बेटर वे में और स्मूदर वे में कम पैसे कम टाइम में करता हो, then your idea is okay. So this is how you can identify your like how is your idea. फॉर एन एग्जाम्पल, पहले हम बात करें एक्सपेंसेस ट्रैकर ऐप का, बेसिक एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ट्रैकर. ठीक है, इससे पहले ओल्ड वे क्या था? ओल्ड वे वी डू इट विद पेन एंड पेपर. ओके, रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है,
और डेटा सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं, बेसिकली ये सारे इश्यूज हैं। बट इफ देयर इज एन ऐप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कौन सी, ये पेन एंड पेपर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है, दोनों सेव होगा तो टाइम सेव होगा, रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रहेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। देन डेटा सिक्योरिटी ऑफ कोर्स रहेगी, यू कैन सेव डेटा टू क्लाउड एंड यू कैन सेव इट फॉर years एंड years एंड years। तो एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप आई जिससे कि यू कैन डू इट, सो दिस इज गुड, ओके, वी विल यूज इट बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स को इसने सॉल्व किया यहाँ पे, ये यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स थी, इस ऐप ने सबको सॉल्यूशन कर दिया, सो दिस आइडिया इज गुड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इवेल्युएट योर आइडिया कि आइडिया बेटर है कि नहीं है। बेटर का बहुत सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल, like this is like very basic thing how you can identify if your idea is working or not. What you should do, you should think, is my idea a problem solver, ठीक है, अगर ये है तो अच्छी बात है, और am I or can I make something more better, basically that's all you have to think about in your idea to identify that it is good or not. That's all, simply. Okay, so first step, this idea is step first. We can write like, yeah, we can write step first, idea. Okay, so now you have idea and you think that okay, this is solving a problem or doing a better solution on an existing solution, तो ये idea आपका ठीक है। What do you do after you get your idea? Okay, you do something like, what do you need to do after your idea? Do a proper documentation, the step two. Okay, step two is proper documentation. This is very much important. You have to divide your documentation in few parts. Like first of all, you have to think like your first beta version. I call it beta version A, beta version B. So beta version, then features you want to provide in beta version, ठीक है, तो बीटा वर्जन सोचना है, उसमें फीचर सोचना है, ठीक है, एंड यू हैव टू गिव इट अ डेडलाइन, ये डेडलाइन भी सोचनी है आपको इन दोनों के लिए, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीजें और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइक फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, उसका इसको आसान भाषा में यू कैन से स्क्रीन फ्लो, कि लाइक कितनी स्क्रीन होगी, पहले लॉग इन होगा, फिर ये होगा, फिर वो ऐसे करेगा, वहां से दो ऑप्शन निकलेंगे, फिर दो और ऑप्शन निकलेंगे, तो ये फ्लो, एक प्रॉपर फ्लो जो कि मिनिमल होना चाहिए, बहुत इजी बेसिक होना चाहिए, जो कि उस ऐप को वर्किंग करे बेसिकली, बीटा वर्जन को। सो हाउ यू थिंक फ्लो, दिस फ्लो को क्या सोचना होता है, योर फ्लो शुड बी वेरी इजी, ओके, your beta version should be very easy and very less featured, but very like useful, because the of beta version na, motive of beta version is just to represent your idea, to public or to investors. This is the motive of beta version. That's why it should be very quick. Okay, इसलिए बीटा वर्जन क्या होना चाहिए, इसके लिए बीटा वर्जन होना चाहिए इजी, क्विक, ये दो पॉइंट बीटा वर्जन में बहुत जरूरी है, इजी,
क्विक। ये जब स्टेप्स फॉलो करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि व्हाई यू शुड, लाइक हाउ यू शुड चूज योर टेक स्टैक। तो दैट इज वेरी 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 मच कंफ्यूजिंग टॉपिक, उस पर बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका बीटा वर्जन आ गया, फीचर्स आ गए, डेडलाइन आ गया, फ्लो ऑफ द ऐप आ गया। सो व्हेन यू नो द फ्लो ऑफ द ऐप ना, देन नेक्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू नीड टू, क्योंकि अब आपके पास आइडिया है, ठीक है, आपके पास में आइडिया है, स्टेप में आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, बीटा वर्जन है, उसके फीचर्स हैं, उसकी डेडलाइन भी है, स्क्रीन फ्लो भी है, वो आपने इजी बनाया है और वो क्विक बनाया है। नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू शुड डू, दैट इज wait, okay, now, yeah, the next step should be database design. Hmm. Database models planning, इसका एक सब पॉइंट होता है, दैट इज रिलेशनशिप्स, database relationship between data models, between data model। ये सारा प्रोसेस आई एम टॉकिंग अबाउट टू बिल्ड अ बीटा वर्जन, नॉट द एंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक रफ, ये आपका, आपको जितना जल्दी आपको आइडिया है, उस आइडिया को जितना जल्दी हो सके यू शुड कन्वर्ट इट टू अ बीटा वर्जन। ठीक है, तो उस बीटा वर्जन में करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, गेट द आइडिया, डू द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड नाउ थिंक अबाउट द डेटाबेस मॉडल्स व्हिच इज डेटाबेस डिजाइन एंड रिलेशनशिप। लाइक इसमें इतनी टेबल्स होंगी, ठीक है, ये एक टेबल इसकी होगी, एक टेबल ये होगी, फिर एक ये टेबल, फिर ये इससे कनेक्ट, वन टू वन, वन टू मैनी, ये इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट। तो वो सब दैट ऑल योर डिजाइन। तो वो इसलिए करना है क्योंकि आपके जो बीटा वर्जन में आपने जो फीचर्स सोचे हैं वो फीचर्स कंप्लीटली इसी पे डिपेंड करेंगे। इफ योर डेटाबेस इज वेल डिजाइंड देन यू, it will be, it will become more easier for you to build your backend। okay, so because database क्या करता है, database design जो है ना, जो database design जो टर्म है, data, no, okay, no, yeah, database design, ये जो टर्म है ना, this term gives you a structure for your backend, which we call API building part. So this database design gives you a structure for your backend, which is very much important. Okay, so you should do it very much clearly or very precisely. Once you are done with your database models design, for an example मैं आपको बता दूं, अगर कोई एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है जो कि हमने लिया था पहले आइडिया, तो अगर एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है हमारे पास में, तो उसमें एक टेबल होगी यूजर्स की, जितने उसमें सारे यूजर्स होंगे, ठीक है, एक टेबल होगी आपके एक्सपेंसेस की, फाइन, ये टेबल आपस में लिंक होगी क्योंकि एक यूजर जो है उसके एक से ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, बट एक एक्सपेंस एक पर्टिकुलर यूजर से ही कनेक्ट होगा, 10 से नहीं होगा। तो ये हो गया वन यूजर हैविंग मैनी एक्सपेंसेस, मतलब ये हो गया वन वन टू मैनी रिलेशनशिप। दैट इज हाउ यू डिफाइन अ रिलेशनशिप। ठीक है, so this is this done. So if you understand this, then you can, this is how you design. So after you do your database model designing part also, then what the step 4 should be, okay, not with this color, with this color. Your step 4 should be now decide the
tech stack, and this is the most difficult part of your startup journey, of your product, of your tech startup. The most difficult part, most difficult, because we are very much confused. Most difficult part to decide. This is the most difficult part to decide. Because why? Because we have so many options. We have many options. ठीक है. तो अपने बैकएंड को डिजाइन करने के लिए ना, because you design your backend, correct? To decide the tech stack, to design or to build backend, तो उसके लिए क्या जरूरी है? You have to decide. There are so many options. Which one you should choose? We should choose the one which we can do as fast as possible, because we have to build our beta version A. So you have to do the so you should choose a tech stack which you can do as fast as possible, मतलब जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता हो. If you think like 80% आप comfortable हैं जावा स्क्रिप्ट में एंड 20% आपको जावा बेसिक्स आती है, तो आपको पूरी सीखनी पड़ेगी. तो आई थिंक दिस इज द गुड ऑप्शन फॉर बिल्डिंग अ बैकएंड, एंड दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर बिल्डिंग अ बैकएंड. दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि दिस विल टेक सो लाइक टाइम जो इसमें लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा. अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले आप इसको, और ये टाइम है, पहले उसको यहाँ से यहाँ तक आप इसको सीखोगे, जितना आपका ये जो टाइम है वो सब वेस्ट हो जाएगा. यहाँ तक सीखोगे आप इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से आपके जो प्रोजेक्ट है उसका ग्रोथ शुरू होगी. ठीक है. तो ये इतना टाइम वेस्ट है, बट ये आपको जावास्क्रिप्ट में यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, बिकॉज यू आर 80% कंफर्टेबल विद इट. सो चूज जावास्क्रिप्ट, और चूज जावास्क्रिप्ट बेस्ड backend tech stack, not Java. There are many fancy terms right now which we can use to build backend. Like okay, अभी क्या क्या options होते हैं? Options to build a backend. Let me tell you. Options to build backend. Currently, you can make with Python, of course, JavaScript, which is Node.js and Express.js. You can build with Java. You can build with Rust, with Go language, okay, etc. So these are the most popular one basically. Python. We use Django for it. For the backend framework, we use. I don't know Django much basically, but we can use it. For JavaScript, we use Node.js, और अगर framework use करना हो, then we use Nest.js. For Java, we use Spring Boot, I think, if I'm correct. ठीक है. और Rust, we use Actix framework, if I'm correct. Actix framework we use for it. Go के लिए I think we will use Fiverr framework most probably, or we just can make our backend with Go language. Okay, yeah. So these are the options. So इनमें से आपको वो चूज करना जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता हो. मे बी वो जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, या जावा, या रस्ट, या पाइथन. बट व्हाट वी डू ना, हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने के थोड़ा फैंसी होने के चक्कर में वी ट्राई टू यूज सम न्यू टर्म्स. रस्ट हो गया कि पहले वो सीखूंगा तो बनाऊंगा वो अच्छा. नो, इट विल टेक सो मच टाइम. If you're really serious to build a startup,
और स्टार्टअप में बहुत टाइम लगता है बनाने में प्रोडक्ट में। अगर आपने कुछ ऐसा चूज कर लिया जो आपको आता ही नहीं, तो आप सीखोगे बनाओगे तो आपको इतना टाइम लग जाएगा कि यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड ऑफ योर वर्क, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बीटा वर्जन बनेगा नहीं, सामने कुछ आएगा नहीं, विजुअलाइजेशन होगी नहीं, विजुअल्स भी नहीं होंगे, तो मोटिवेशन बरकरार ही नहीं रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक बेसिकली। मैं होता तो मैं वो चूज करता जो मेरे को सबसे सबसे ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल, my current the product I am making from the scratch, I am using JavaScript, and for backend I am using my tech stack. Okay, this is like my backend tech stack. What I am using for my startup, my backend tech stack जो कि मैं यूज कर रहा हूँ. I can tell you what I've decided. Node.js, Express.js of course, along with TypeScript. I am using PostgreSQL. I am using Prisma as ORM. I am using JWT for authentication, and I'm using Docker and DigitalOcean for deployment, and other JavaScript libraries. There are tons of them. Another JavaScript library. So this is my current tech stack. This is my current tech stack for my startup. Why? Because I know JavaScript. Simple. I can do one thing. I can learn Rust for the next 6 months, and then for the next 6 months I will try to build a beta version. It will take 12 months altogether, and there's a high chance that I will get demotivated even before even 3 months, because learning something new is a completely new experience, and your motive is something else. You want to build something, you don't want to learn something, you want to build something while learning something even more. Okay, so like if you get, if you can get whatever I'm saying. But same thing if I'll do with this JavaScript, I'll take 6 months. After 6 months, I'll be having my beta version A. So my motivation will be there throughout the journey, and this is very much needed thing when you start something. Okay, so let's end this video here. In this video, I was telling you, I was trying to let you know that how you should design your tech startup journey or work. So first you should get an idea, then do all these things what I have written here and I was telling you. Then step two, proper documentation. Step three, uh, basically proper database models, designing relationship designing. Then you have to do your decide the tech stack, and then finally you start. The step fifth is just finally start coding it. That's all. Okay. Step fifth is okay. It's nowhere ugly. Fifth is start coding it. That's all. Okay, so let's see you in the next video, and I'll try to tell you something more interesting than this if it was not interesting.